Assalamu alaikum everyone, this is Osama Rizvi and welcome to another episode of the WTI Talks. आज का जो टॉपिक है हमारा, it's a very special important topic. It is regarding the CSS interviews. अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले some points. सबसे पहले तो आपको पता है वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट और उसकी सारी टीम, हम बल्कि इसको कैंपेन भी करते हैं, इस आइडिया को चैम्पियन करते हैं कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो बाइलिंगुअल होने चाहिए, उर्दू के अंदर देने की भी ऑप्शन होनी चाहिए. बट एज ऑफ टुडे हम अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, अंग्रेज़ी ही मीडियम है उसका, तो हमने ये कॉन्वर्जेसन को भी बाइलिंगुअल रखने की कोशिश की है. Deliberately, of course, we will converse in English as well because your interview is going to be in English. But साथ ही अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उर्दू में बात करेंगे. Secondly, इसके अंदर जो questions हैं, क्योंकि मैं खुद भी किसी पॉइंट पे और सर जो हमारे गेस्ट हैं वो भी, he has been engaged in this CSS interview process for over a decade. तो उसके अंदर जो commonly asked questions हैं by the students, हम उनको address करेंगे इसके अंदर. Now, the introduction of this guest, Sir Osman Khan. He is one of the founding members of World Times Institute and also the pioneers of the interview process and program here at the World Times Institute. He's a senior CSS mentor who specializes in teaching international law at the academy and also engages in other specialized areas of current affairs such as Kashmir issues, such as United Nations and etc. He is a renowned lawyer and a legal expert, and he has advised various state and sub-state organizations concerning matter of international law and constitutional law. And at the academy, he is one of the focal persons, key persons जो interviews के related candidates के questions होते हैं, हम उनको उनकी तरफ direct करते हैं. तो we thought why not we widen the outreach ताकि जो online लोग हमें सुनते हैं, YouTube पे सुनते हैं, वो भी इस चीज़ से benefit हासिल कर सकें. Welcome to the show, sir. Sir, thank you so much for taking your time today. Sir, सबसे पहले मैं bigger picture question से शुरू करना चाहूँगा एक in the beginning. Before we go into the technicalities, can you please elaborate for the students, for the prospective candidates, what is the actual purpose of the interview? Thank you very much for asking this question, Osama. In fact, this is one thing जहाँ पे candidates सबसे ज़्यादा गलती करते हैं. कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, बाय एंड लार्ज जो हमने ऑब्जर्व किया है, देयर एंटायर फोकस इज टूवर्ड्स द रिवीजन और द अपडेटिंग ऑफ देयर नॉलेज बेस, विच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज करेक्ट एज वेल. बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज एज टू व्हाट इज द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ इंटरव्यू. इंटरव्यू लिया क्यों जाता है? सो बिफोर आई टेल यू द पर्पस इटसेल्फ, आई वुड फर्स्ट वांट टू क्लैरिफाई व्हाट आई जस्ट सेड कि अगर पर्पस ऑफ इंटरव्यू सिर्फ टेस्ट ऑफ नॉलेज होता तो वो तो हम आपके रिटर्न में कर चुके हैं. अगर सीएसएस की बात करें तो 1200 मार्क्स के थ्रू कर चुके हैं. आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो चुकी है, आपके पाकिस्तान अफेयर्स का नॉलेज टेस्ट हो चुका है, आपके करंट इश्यूज के ऊपर ग्रास्प टेस्ट हो चुकी है, इस्लामियात के हवाले से, एंड देन 600 मार्क्स का आपको ऑप्शनल्स है. उसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल लॉ, व्हाटएवर सब्जेक्ट दैट यू टेक. सो नॉलेज तो कैंडिडेट अपनी रिटर्न में डेमोन्स्ट्रेट कर आता है, रिटर्न में वो डेमोन्स्ट्रेट हो गई है, आपकी वो एसेस हो गई है, ग्रेड हो गई है. इंटरव्यू की पर्पस बेसिकली, अगर इसको एक फिक्र में बात आपसे करूं, तो इट इज टू असेस द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर. जिस भी चीज का इंटरव्यू है, वो चाहे सीएसएस का है, वो चाहे पीएमएस का है, वो चाहे FIA का है, वो चाहे नैब का है, वो चाहे पुलिस का है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूअर का सिर्फ एक मकसद होता है, टू सी इफ दिस कैंडिडेट हु इज सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी टुडे सुटेबल फॉर द पोस्ट ही हैज अप्लाइड फॉर. बिकॉज ये सुटेबिलिटी रिटर्न से डिटर्मिन नहीं हो सकती. रिटर्न में तो आपके सामने एक पेपर है, वी डू नॉट नो इफ द पेपर इज अ ही और अ शी, इफ इट्स अ मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम, if it's a Sindhi or a Baloch or a Punjabi or a Pashtun, what are his political ideas, what are his religious views, how balanced his personality is. ये सारी की सारी चीजें पेपर से जानना कंप्लीटली मुमकिन नहीं. प्रिसाइजली वाई किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सेकेंड एंड देयरबाय मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंटरव्यू.
जिसमें हम कैंडिडेट की सूटेबिलिटी देखते हैं उस पोस्ट के हवाले से। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा फॉर इंस्टेंस, सब समझाने के लिए अपने लिसनर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को। फॉर इंस्टेंस, एक शख्स है, ही अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या एक एम्प्लॉयर है, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सर्विसेज हायर करनी है। नाउ इफ दैट एम्प्लॉयर इज यू, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लेना है, तो व्हेन दैट कैंडिडेट और द एस्पिरेंट enters your office, what would you be looking for? Would you be concerned if he is wearing a suit or not? Would you be concerned how his interpersonal skills are? थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स एक नॉर्मल डिग्री तक होता है, बट वुड यू बी कंसर्न कि इसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसका पोर्टफोलियो, उसने आज तक किस किस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर कितना अच्छा चल रहा है, उसका फीडबैक कैसा है, एंड हाउ कैन ही बेस्ट अंडरस्टैंड एंड डिलीवर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यू सी, यहां पे आप जब उसका इंटरव्यू करेंगे तो इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड पर्पस ड्रिवन। सेम इज द केस विद सिविल सर्विसेज। जब एक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट आता है, तो जो यहां पे इंटरव्यू बैठा है, जस्ट लाइक एनी अदर सर्विस, उसमें कम से कम एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो खुद उस सर्विस से किसी न किसी स्टेज पे लाइफ में जुड़ा होगा, जिसको उसकी एक बेसिक नोहा होगी। मीनिंग thereby he knows the nature of the job that the candidate has applied for, and as such the interviewer also understands what are the requirements of that job. So उन चीजों को मलहूज़ नजर रखते हुए, at the back of his mind, उसको जहन में रखते हुए इंटरव्यूअर कैंडिडेट से क्वेश्चंस करता है, उससे बातचीत करता है, उसकी पर्सनालिटी को असेस करता है। एंड ऑफ कोर्स वो बातचीत जो होनी है उसमें नॉलेज के थ्रू भी हो सकती है, किसी चीज पे तो उसने आपसे बात करनी है। बट ये समझना कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज अलोन, एंड मैं अलोन को इधर एम्फेसाइज कर रहा हूं, आई एम नॉट डाउन प्लेइंग इट्स इंपॉर्टेंस, आई एम सिंपली सेइंग इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज अलोन। ये एक आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की असेसमेंट है, जिसमें वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू भी उसको जांचते हैं। सेकेंडली, इंटरव्यू की पर्पस जो एक चीज नहीं है, मैं वो भी यहां पे आज I would like to take this opportunity and clarify it for my students, for the candidates. वो ये है कि क्योंकि मैंने बोला कैंडिडेट का बहुत ज्यादा एम्फेसिस गैदरिंग ऑफ नॉलेज पे होता है, तो एज सच their approach towards interview becomes flawed. यहां पे जो एक चीज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, it's been like almost 12 years now, if not more, that हमेशा हर साल कैंडिडेट्स को मैं समझाता हूं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी डेंट होता है ड्यूरिंग अ मॉक इंटरव्यू, वो ये है कि कैंडिडेट्स टेंड टू टेक इंटरव्यू एज अ क्विज। इट इज नॉट एट ऑल अ क्विज। यहां पे इंटरव्यूअर आपके सही और गलत जवाब नहीं गिन रहा होता। स्पेसिफिकली अगर मैं CSS या PMS की बात करूं, वहां पे एक बहुत मैक्रो लेवल पे वो आपके एक पिक्चर को असेस कर रहा होता है इंटरव्यूअर। उसमें मल्टीपल चीजें हैं जिस पे होपफुली इंशाल्लाह हम बातचीत भी करेंगे, बट ये क्विज बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने 10 में से एक ड्रॉप कर दिया तो 9 या 8 या 7 या 6, ये मैटर नहीं करता कि आपके 4 ड्रॉप हुए हैं तो 6 ठीक हुए हैं। मैटर ये करता है कि जो 6 दिए हैं वो कितने अच्छे, बैलेंस्ड, मेच्योर और रीजनेबल आंसर्स थे, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर टेस्टिंग, द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉट जस्ट हिज नॉलेज अलोन। सो ये एक चीज कैंडिडेट्स को हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि ये क्विज नहीं है। योर आंसर्स शुड बी आर्टिकुलेटेड इन अ वे दैट दे शो योर ओपिनियन एज वेल, दे शो और दे अंडरलाइन और एग्जिबिट योर एबिलिटी टू एनालाइज अ सिचुएशन एज वेल, एंड एट द सेम टाइम सर्टेन अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिन पे हम बात अगर करें तो वो भी आगे आएंगे। बट अगेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, टू सम इट अप, जो मैं कहना चाह रहा था, is to assess the suitability of personality of the candidate, keeping in view the nature and requirements of the post he has applied for. Sir, thank you so much. एक जो बड़ी अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट की, that was what not to do as well. एक तो होता है कि हमने क्या करना है, but equally important is to learn what to avoid. तो जो आपने क्विज वाला पॉइंट हाईलाइट किया था, that was really really helpful. Sir, आपने एक वर्ड यूज़ किया suitability का, and we listen to this word a lot. So my second question to you would be, how does the panel actually determines this suitability? What are they looking for in a candidate?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसामा. इंटरव्यूअर क्या देख रहा होता है कैंडिडेट में? वेल, लाइक आई सेड कि ये मोस्टली डिटर्मिन होता है विद रिगार्ड्स टू नेचर ऑफ द पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर. सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप प्रोविंशियल लेवल पे पुलिस सर्विस में आप एंट्री के लिए इम्तिहान इंटरव्यू दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, एएसआई के लिए, तो यहाँ पे द नेचर ऑफ द जॉब इज नॉट ओनली मेंटल बट लार्जली फिजिकल इन नेचर. सो उसमें आपकी जो एक ओवरऑल अपीयरेंस है, आपकी फिटनेस है, उन चीज़ों से तो आप गुजर आते हैं. बट फिर उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है कि कितना बैलेंस्ड है, कोई इसमें एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी तो नहीं है, नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं इस बंदे के, कैन ही हैंडल अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज ये वो बंदा है जिसने फील्ड में जाना है इन अ यूनिफॉर्म, इवन आर्म्ड. सो ही हैज़ टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. सो उसके इंटरव्यू जब लेता है, आमतौर पर एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो बंदा जरूर होगा जिसको पता है कि मेरी जॉब क्या है, उसकी नेचर क्या है. वो उस मोल्ड को जहन में रखते हुए आपको देखते हैं. बट अगर आज, क्योंकि हमारी नशिस्त फॉर इंस्टेंस प्राइमरीली कंपैटिटिव इम्तिहानात सीएसएस की तरफ है, यहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्योंकि देर आर मल्टीपल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जिनके लिए आप कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन इस परफॉर्मेंस आपने उसको ग्रुप एलोकेट करना है उसके मुताबिक. तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी की असेसमेंट है, दैट इज अ लिटिल ब्रॉडर. It starts with the first thing which in my opinion is very important is the confidence of the candidate. Confidence किसी भी इंटरव्यू में, and specifically इस इंटरव्यू में, is I believe is the first thing that all of us notice consciously or unconsciously. From the moment a candidate enters into the room, how he takes his seat, the posture he maintains, the eye contact, the hand movement, the overall body language, जिसको हम लोग non-verbal communication कहते हैं, ये all of these things exude confidence. So, like I was saying, कि आपका जो confidence है, it is exuded or it is demonstrated by a non-verbal communication as well. But at the same time, what candidates normally don't understand or what many people fail to somehow advise the candidate is, कहते तो सब है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट वेरी ऑफ्टन टॉक्ड अबाउट कि ये लाया कैसे जाए, कॉन्फिडेंस आता कैसे है. एंड लाइक आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट अ पिल दैट यू पॉप और इट्स नॉट अ पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू कैन एडोन. इट इज़ समथिंग दैट एमिनेट्स फ्रॉम योर ओवरऑल बिहेवियर. कॉन्फिडेंस आता है सर्टेनिटी से. When the candidate is certain about what he is talking about. Predictability से, certainty से confidence आता है. और certainty इंटरव्यू में या किसी भी जगह पे आती है preparation से. So if you're not prepared about any particular area or any particular question for that matter, that means you won't be certain about it. And if you are uncertain about something, it would naturally dent your confidence. So interview mein confidence, like I said, is the first and the most important thing which an interviewer notices in a candidate from the moment they enter into the room and throughout the duration of the interview. Throughout the duration and उसके overall performance से हम ये चीज़ एक नोट करते हैं, because हमारे जहन में होता है कि इस शख्स ने once appointed फील्ड में परफॉर्म करना है, इसने अपने से बहुत सीनियर ऑफिसर्स से भी डील करना है, इसने अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को भी मैनेज करना है, इसने पब्लिक डीलिंग भी करनी है, इसने और डिफरेंट इदारों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ लेजॉन भी करना है. सो दिस इज वन पर्सनैलिटी ट्रेट which a civil servant, or for that matter any person in any job, specifically jobs related to public service, this one personality trait is something जिससे एक candidate या एक officer shall be benefiting throughout his life and career for that matter. The second thing जो कि इंटरव्यू के अंदर नोटिस की जाती है, अगेन ये कुछ हम लिख के नहीं करते कि इस पे इतने दिमाग से, बट हम सब इसको अनकॉन्शियसली देखते हैं, that is the composure of the candidate. How composed you are in your performance. So for instance, जहाँ पे सवाल आता है तो are you like, some candidates, they are like jumping out of the chair वाली बात होती है, they cannot contain themselves, over excited हो जाते हैं. And at the same time,
अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता, विच इज ओनली बट नेचुरल बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, इट इज नॉट अ क्विज. तो द कैंडिडेट शुड नॉट बी ऑल ओवर द प्लेस. योर पर्सनैलिटी शुड बी कंपोज्ड. हाउ यू हैंडल योरसेल्फ, हाउ यू मेंटेन योर कंपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम एक शख्स को देखते हैं स्पेसिफिकली या स्पेशली पब्लिक सर्विस के तनाजुर में, कि अगेन वही वाली बात कि उसने ऑफिस में भी परफॉर्म करना है, सीनियर जूनियर, एंड एट द सेम टाइम उसकी पब्लिक डीलिंग भी है, जो कि ज़्यादातर सर्विस ग्रुप्स में है. तो कंपोजर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसको हम ठहराव भी कह सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड थिंग, ऑल्दो मैं इसको बोल तीसरे पे रहा हूं, बट इन माई humble opinion, like I always say, is the most important for me, because I think ये जो तीसरी बात मैं करने लगा हूं, ये पहली दो को establish करती है. That is communication. Communication skills are very important. And one thing that candidates need to understand is that जिस तरह written लिखने का इम्तिहान है, interview बोलने का इम्तिहान है. आपके पास जितना मर्जी knowledge हो written में, whatever you have here, if you cannot pen it down, if it does not show on the paper, that knowledge is non-existent, because this paper is the only way for you to converse with the paper checker, the examiner. Interview में एक edge भी है, at the same time थोड़ा सा ये आपको टेस्ट को जरा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, बट जरा ज़्यादा डिटेल कर देता है. वो ये कि आप पेपर से निकल के अब सामने आ गए, वो आपको डायरेक्टली देख रहा है. ही इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद यू. सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कम्युनिकेशन में भी दो डिमेंशंस हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है आपकी लैंग्वेज, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपका फ्लो, ठीक है, आपकी प्रोफिशिएंसी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट वर्बल कम्युनिकेशन. मैं यहां पे यह भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैनी कैंडिडेट्स थिंक दैट गुड कम्युनिकेशन मीन्स यूज ऑफ जार्गन. इनकरेक्ट. गुड कम्युनिकेशन मीन्स जहां पे आप अपनी बात इफेक्टिवली दूसरे तक पहुंचा सकें. दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. दैट इज गुड कम्युनिकेशन. कम से कम जुबान की गलती के साथ, while ensuring कि जो आप कहना चाह रहे हैं एग्जैक्ट वही अगले तक पहुंचे. दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वो चाहे अंग्रेजी जुबान में है, चाहे उर्दू में है. सो कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स नंबर 1 पे आता है. एंड ये भी पूछते हैं बच्चे कि सर कितनी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए. यहां पे मैं ये भी आज एक और चीज, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बट इट्स इंपॉर्टेंट जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर आवर एस्पिरेंट्स, फॉर आवर यंग स्टूडेंट्स, यू नो, द कैंडिडेट्स. आप सब ने आज तक जितने इम्तिहानात दिए हैं इस इम्तिहान से पहले, उनमें मोस्ट का, मेजॉरिटी का रादर, जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो अंग्रेजी में है. सो दैट मीन्स कि इतनी अंग्रेजी तो हर कैंडिडेट के पास है कि जिसमें वो कम से कम गलती के साथ, अपेरेंटली रीजनेबल एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ, अगर मेरी नज़र में, तो इतनी अंग्रेजी तो हर एक को आती है कि वो अपनी बात दूसरे तक कम से कम गलती के साथ कम्युनिकेट कर सके. What they are lacking is the practice of speech. उसमें एक डिफिकल्टी है, बिकॉज हमारी आम रोजमर्रा की जुबान अंग्रेजी नहीं है. ये वो पॉइंट है जिसके वजह से कई दफा कैंडिडेट कहते भी हैं कि इंटरव्यू उर्दू में क्यों नहीं लेते, हमारी कौमी जुबान है अंग्रेजी. और हमारा इदारा बहुत टाइम्स इसके ऊपर हम इसको कैंपेन भी करते हैं. वी आर रेलिंग कि ये दोनों चॉइसेस कैंडिडेट के पास होनी चाहिए. बट जैसा कि एट डिफरेंट ओकेजन्स हमने कहा, ये फिलहाल language of the interview, or for that matter our official language is English, so we have to conduct it that way. But at the same time मैं इस बात को री-एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जितनी मिनिमम अंग्रेजी रिक्वायर्ड है वो तो आप CSS के रिटर्न में क्वालिफाई कर चुके हैं, आपने दिखा दिए. All you need to practice is speech now. The second type of communication is non-verbal communication, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है. आपका कमरे में एंटर होने से लेके चेयर पे आके बैठने तक, आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी हैंड मूवमेंट, आपका पॉस्चर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट और टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो इनका भी बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अगेन इंटरव्यू में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है.
to exhibit or to convey your confidence and composure. The third thing that the interviewer looks for in a candidate, जो देखी जाती है, the fourth thing, is the maturity of thought. How mature you are in your responses. कई दफ़ा कैंडिडेट्स ऐसे जवाबात देते हैं जिनका शायद रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, जिससे दिखता है कि या तो इसको मेरा सवाल नहीं समझ आया या इसको खुद नहीं पता कि इससे बात क्या हो रही है. सो मेच्योरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के लिए एस्पायर कर रहे हैं. आपका डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन होगा पब्लिक से, मासेस से. सो इसके बाद जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रीजनेबलनेस ऑफ आंसर्स. हाउ रीजनेबल योर आंसर्स आर. मेनी टाइम्स कैंडिडेट्स, इट इज गुड, चलो इसको ऐसे कहते हैं, इट इज गुड टू गिव आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस बट दे शुड नॉट बी फार फेच्ड. मैनी टाइम्स बट कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू में जवाब देते हैं, हम लोग जब मॉक इंटरव्यूज करते हैं तो वो ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस का या प्रॉब्लम्स जो विच आर पुट टू देम जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं या वो हमारे दस्तरस में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट व्हेन यू गिव एन आंसर इट शुड बी रीजनेबल. And the word reasonable here means something that stands to reason. So if you are an assistant commissioner in the field, आपका काम administration है in the field. You cannot say, I want to take part in policy making as an assistant commissioner. That is not your primary job, or in most cases, not even the job, at least at this level. That shows कि आपको post का ही नहीं पता कि आप आ किस काम के लिए रहे हैं. So understanding of nature of job, उसकी requirements और उसके मुताबिक ये personality traits coupled with good knowledge base is something that creates the desired impression or that's something that demonstrates the suitability of a candidate for the post applied for. Sir, thank you so much. That was really comprehensive. इसके साथ ही जो next question logically मुझे ज़हन में आ रहा है कि as there is no syllabus for the interview, it's an open-ended sort of thing. So what should the candidate be preparing? Along what lines should the candidate? आपने कुछ उसको अभी allude भी किया है, मगर थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता सकें. Osama, I won't say that I would differ with you over here, not at all, but I would like to qualify this statement कि इंटरव्यू का सिलेबस नहीं है या इंटरव्यू प्रिडिक्टेबल नहीं है. आई बिलीव इट इज नॉट कंप्लीटली बट टू अ लार्ज एक्सटेंट. किसी भी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं, या चले अगर हम लोग CSS की बात करें या PMS की बात करें स्पेसिफिकली, तो देर आर सर्टेन, लेट्स पुट इट दिस वे, बकेट्स ऑफ क्वेश्चंस जहां से इंटरव्यूअर आपके क्वेश्चंस पिक करता है. और अगर आप इस अप्रोच पे चलें तो इसकी सिलेबस तो नहीं, बट इट बिकम्स वेरी प्रिडिक्टेबल बिकॉज आपका interview is almost based on your profile and who you are, keeping in view the nature of the job. So अगर हम लोग इस चीज को देखें, इस पे अगर हम लोग, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं, तो इंटरव्यू CSS या PMS स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस 4 डायमेंशंस है जहां से इंटरव्यूअर बेसिकली पिक्स योर क्वेश्चन. अगर आप इन डायमेंशंस को प्रिपेयर करेंगे तो इट वुड बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू टू प्रिपेयर एंड therefore easier as well. The first dimension jahan se interviewer picks questions is you yourself. Aapki zaat. Something that most candidates take, something that is taken granted for. ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी में आपकी जात से जुड़े हुए सवालात क्या हैं? उसमें even your name for that matter, the area you hail from, आपका शहर जहां पे आप रहे हैं, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आप क्यों उस एकेडमिक बैकग्राउंड से इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, आप क्यों अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं. नो वन इज डिसवेडिंग यू कि आप ये चॉइसेस क्यों कर रहे हो, बट द इंटरव्यूअर मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग एज टू व्हाट इज योर रीजन. सो फॉर इंस्टेंस एक कैंडिडेट है, वो FSC करता है, फिर वो कॉमर्स में चला जाता है, BCom में, and then he ends up obtaining a degree of law. So एक वेरिएशन है. No one is saying कि आप qualified नहीं, eligible नहीं है, but it is only but natural for the interviewer to ask कि as to why this variation. अब ये questions वो हैं जो आपकी personality से जुड़े हुए हैं, आपकी जात से जुड़े हुए हैं. जैसे मैंने आपसे बात की, आपका शहर, आप लाहौर से हैं,
तो लाहौर के कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस, आपका फेवरेट सिटी है फॉर इंस्टेंस लाहौर, व्हाई डू यू लाइक इट, ठीक है, आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर फ्रीक्वेंटली या कहीं पे आपने पोस्टेड हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप कैंडिडेट इनको एक सफ़े पे लिख ले और तैयार कर ले तो ये इंटरव्यू का एक मेजर पोर्शन है। दिस इज अ मेजर पोर्शन ऑफ इंटरव्यू। जैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, आपसे गुफ्तगू हो सकती है, इसमें मैं ऐड मजीद कर दूं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी आती है इसके अंदर। इवन फॉर इंस्टेंस योर वन ऑफ योर पेरेंट्स और बोथ योर पेरेंट्स आर फ्रॉम द सिविल सर्विस इटसेल्फ और योर सिबलिंग्स, सो ये एक डायमेंशन है। द सेकंड डायमेंशन और द सेकंड बकेट, यहां से जब इंटरव्यू बाहर निकलता है, जिधर हमने जो पास्ट ईयर्स में जब आप ट्रेंड को देखे उसकी बुनियाद पे मैं आपसे सारी गुफ्तगू कर रहा हूं, तो आपको दिखता है कि इंटरव्यू जहां पे जाता है दे कैन बी योर ऑप्शनल्स, जो आपके उस मुकाबले के इम्तिहान में जो ऑप्शनल्स थे उससे भी क्वेश्चंस पिक होते हैं। जब वहां से इंटरव्यूअर बाहर आता है तो देन द थर्ड डायमेंशन, जहां से क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे जाते हैं या हम लोग देखते हैं कैंडिडेट्स से किए जाते हैं, वो है आपके करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज। एंड देन लास्टली द फोर्थ डायमेंशन इज द पोस्ट इटसेल्फ, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। सो इट इज वेरी प्रोबेबल कि आपसे इंटरव्यू पूछे व्हाई दिस पर्टिकुलर ग्रुप, you have a background in accounting, so why not audit and accounts? Why do you want to aspire Pakistan Administrative Service or Foreign Service of Pakistan for that matter? These are all probable, reasonable questions, जो कि अगर आप थोड़ा सा closely watch करें तो आपका interviewer becomes largely predictable. All that is required is an organized study. So यहाँ पे मैं listeners को या अपने viewers को या कैंडिडेट्स को यही एडवाइस करूंगा कि अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में इन 4 डायमेंशंस में अगर आप इसको डिवाइड करें तो यू वुड सी कि आपका क्वेश्चन पूल बिकम्स वेरी विजिबल एंड इंटरव्यू बिकम्स वेरी इजी टू आंसर। जैसा करंट अफेयर्स है तो उसमें करंट प्रॉब्लम्स भी तो हैं। आजकल पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू ट्राइंग टाइम्स व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक फ्रंट। इजंट इट नॉट प्रोबेबल कि उस पर बातचीत हो? देयर आर इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस दैट आर क्रॉपिंग अप एवरी डे, and especially if you are a student of law, तो isn't it but predictable कि वो आपसे उस पर आपकी सोच, आपकी thoughts जानना चाहें? So you just have to see your biodata, your academic background, your professional background, your subjects, and what you aspire to join. तो काफी हद तक interview की preparation becomes easy because it becomes organized. Sir, that was once again very enlightening. और जिस तरीके से आपने कैटेगराइज कर दिया है, आई बिलीव इट विल रियली हेल्प। अगर मैंने भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो तो आई वुड नो सॉर्ट ऑफ अ चेकलिस्ट कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेकलिस्ट करनी है। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अनदर थिंग व्हिच इज द थिंग इन मैनी केसेस, द इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन? सर, 2 क्वेश्चन है इसमें मेरे। एंड सेकेंड, व्हाट इफ बिकॉज इट हैपेंस एट टाइम्स यू आर नॉट allowed or you're not given a chance to introduce yourself? So in दोनों को अगर आप थोड़ा elaborate कर दें। Very important question, Osama. Introduction, in my opinion, is the most important question that a candidate needs to prepare. And at the same time, it is the most important question that may be asked during an interview. Why? Because as I understand, or as I believe, I would say, if you allow me to, it is the first and the last opportunity for a candidate to steer the dimension of his interview or to determine कि उसके इंटरव्यू की डायरेक्शन क्या हो. If not absolutely last, apparently the last, because अगर आपने शुरू में अपने इंटरव्यू की डायमेंशन क्लियर कर दी है तो it becomes more predictable and easier for you to lead the interviewer. Having said that, जो आप दूसरी बात की, कई दफा इंट्रोडक्शन नहीं भी मांगते, यस, शायद वर्बली ना मांगा जाए, बट आपका इंटरव्यू फिर भी शुरू आपके इंट्रोडक्शन से ही होता है. इवन बिफोर यू एंटर द इंटरव्यू रूम एंड टेक द सीट बिफोर द इंटरव्यूइंग पैनल, योर इंट्रोडक्शन is already there in front of the interview in the shape of your biodata form. आप मेरे सामने फिजिकली बाद में एंटर होते हैं, बट आई एम ऑलरेडी लुकिंग एट यू ऑन दिस फॉर्म. दिस इज प्रिसाइसली वाई, बाय द वे, ये पर्पस कई दफा बच्चे समझते नहीं, दिस इज प्रिसाइसली वाई कहा जाता है कि प्लीज इफिक्स अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो. अब आप इमेजिन करें, मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन पहले शुरू हो चुका होता है,
कि आपने जो पिक्चर लगाई है, जो कि कई कैंडिडेट्स करते हैं, ऑब्जर्व किया है, लाइक आई सेड फॉर द पास्ट 12 years नाउ, वो मैट्रिकुलेशन के वक्त की हो सकती है, एंड नाउ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट. सो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी जो मेच्योरिटी ऑफ पर्सनैलिटी है, दैट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली. सो इमेजिन व्हेन आई एम लुकिंग एट द फॉर्म, it is one person, and when the candidate enters his appearance and takes a seat in front of me, appears to be a person different altogether. So आपका introduction तो मेरे सामने आ चुका हुआ है, आपकी even appearance भी आ चुकी भी है. Then your name, your father's name, your father's occupation, your academic background, your professional background, your subjects, ये सब कुछ मेरे सामने है. तो who says, कौन कहता है कि इंटरव्यू इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं होता? एंड यहीं से इंटरव्यूअर स्टार्ट्स इन हिज माइंड, स्टार्ट्स टू डिसाइड कि मैंने इससे क्या बातचीत करनी है. सो वो बातचीत वो आपके एकेडमिक प्रोफाइल से भी पूछ सकता है. मिसाल के तौर पे आपका मास्टर्स है एनवायरमेंटल साइंसेस में, एंड क्लाइमेट चेंज इज अ बिग चैलेंज फॉर अस टुडे. Isn't it only but natural for him to ask you a question on environment? Now here कई बच्चे कहेंगे सर मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं मांगा, लेकिन वो बात तो आपसे आप ही के प्रोफाइल से कर रहे हैं. अब यही गुफ्तगू आप अगर इंट्रोडक्शन में करते, ठीक है, तो वहां से वो पिक करता, बट अगर उधर से ना भी करे तो आपके बायोडाटा फॉर्म में वो चीज प्रोवाइडेड है. सो दिस इज प्रिसाइजली व्हाई वी से कि बायोडाटा फॉर्म को बहुत केयरफुली फिल करना चाहिए. सेकेंडली, यहां पे मैं खुद थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं, व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी देयर इन एन इंट्रोडक्शन. आइडियली योर इंट्रोडक्शन इज अबाउट हु यू आर, और उसमें बेसिक चीजें हैं. आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है, यू मे नॉट नीड टू गो ऑल द वे अप टू योर स्कूल और द मैट्रिकुलेशन डिग्री, अनलेस ऑब्वियसली द इंटरव्यूअर आस्क्स यू. इट इज मोस्टली योर लास्ट डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री. अब चले बैचलर्स और मास्टर्स आप देख लें. देन वेयर यू आर फ्रॉम, फॉर इंस्टेंस, ऑर्डर ऑब्वियसली इसका आप अरेंज करते हैं. मैं एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द एरियाज. आप किस इलाके से, आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ा है, आप क्या कर रहे हैं आजकल, आपके कोई हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी लेकर आ सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली. अगेन लाइक आई सेड कि इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, बट नॉर्मली दीज आर द थिंग्स विच मे बी शेयर्ड. यहां पे इंपॉर्टेंट ये है जानना कि प्लीज आप इंटरव्यूअर को कुछ दें जिससे वो आपसे गुफ्तगू कर सके. सो फॉर इंस्टेंस, आप एनवायरमेंटल साइंसेस के हैं और आपका कोई थीसिस है ऐसा जो कि आजकल की किसी बड़ी करंट प्रॉब्लम से रिलेट करता है, वो जरूर बताएं. दैट इज समथिंग यू हैव डन, एंड इन अ वे इवन योर अचीवमेंट. You may be giving the interviewer something to talk about. So introduction is of cardinal importance during an interview, and a candidate must prepare it, threadbare and very carefully. Very well said, sir. My final question is also a question, जैसे कि सर इंट्रोडक्शन में कहा था कि the point of today's podcast conversation is to highlight the commonly asked questions from the students. So जो एक और सर क्वेश्चन आता है, that is about the answer itself. So if in one phrase I would ask, how do you approach an answer? There are different sort of questions that are asked. इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? How to approach an answer? Very important and very simple. Come straight to the point. That is the key. We as lawyers, जब हम कोर्ट में भी जब प्रिपेयर होते हैं, मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूं आपके पास. मेरे लिए मेरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर 20, 30 और इवन 50 अदर इंपॉर्टेंट केसेस वेटिंग इन द लिस्ट, एंड दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टीज एज वेल एज फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सो मेरे वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट एज टू आज आपके सामने क्या मैटर पेंडिंग है, मेरा इस पे क्या मौकिफ है, और मैं कैसे क्वालिफाई करता हूं रिलीफ के लिए. सेम थिंग हम वो एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं इंटरव्यू में भी. व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. जो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछे एग्जैक्ट उससे शुरू करें. उसके दो फायदे हैं. एक, इट डेमोन्स्ट्रेट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन. टू, it helps you or provides you a base to build further.
कैंडिडेट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि आपसे जो सवाल पूछा है वो स्ट्रेट उस पे आने के बजाय पहले उसके कॉन्टेक्स्ट पे चलना शुरू करते हैं, जो रिटन का आमतौर पे तरीकाकार होता है, जिसको तमहीद बांधना भी आमतौर पे आपसे कहा जाता है, और फिर आते हैं पॉइंट पे। कई दफा इंटरव्यूअर इसको इवन डिस्करेज कर देता है एंड ही कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली थिंकिंग कि इसको शायद मेरा सवाल ही नहीं समझ आया। और कई दफा फिर कैंडिडेट को स्ट्रगल करना पड़ता है अगर वो उसको पॉइंट आउट भी कर दे कि आपने मेरा क्वेश्चन समझा है, एंड देन कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स एंड अप सेइंग कि आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट, व्हिच अगेन डज नॉट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन। सो यू शुड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर मैं एग्जांपल दूं इसको बहुत सिंपल समझने के लिए, फॉर इंस्टेंस समवन आस्क्स यू हु आर यू, आप कौन हैं, तो इसका जवाब है सिंपल सा, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम उस्मान खान। इज दैट अ डिफिकल्ट आंसर? नो। बट अब अगर इसका जवाब कोई शख्स ऐसे दे कि मैं एक बाप भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं, मैं एक भाई भी हूं, तो यस ये सारी बातें दुरुस्त तो हैं, बट आपसे पूछा क्या है, आप कौन है, यू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो आपसे अगर पूछा जाए व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, तो आप सिंपल बोलेंगे इट केम इनटू बीइंग ऑन 14th of August 1947। बट आप कहें कि सर ये तब क्रिएट हो गया था जब पहला मुसलमान बरे सगीर में एंटर हुआ, और फिर उसके बाद आप एक चले, बात दुरुस्त है, बट इट इज बेटर कि आप स्ट्रेट टू द पॉइंट आए और फिर उसके ऊपर बिल्ड करें। यहां पे ये भी चीज ज़हन में रखिएगा, रेलिवेंट और रिक्वायर्ड का डिफरेंस। All knowledge may be relevant, but not all of it is required. Understand the requirement of the question. जो आपसे पूछा है उससे जुड़ी हुई जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उसके ऊपर फोकस करें, फिर आगे चलें, सिर्फ रेलिवेंस के पीछे मत जाएं। Thirdly, it's very important how to approach the question में आर्टिकुलेशन। कई दफा होता है कि सवाल ऐसा है जिसमें देयर इज नो वन स्ट्रेट पॉइंट, इनफैक्ट 3 या 4 डिमेंशंस हैं आपकी उसकी, तो फिर उसमें आर्टिकुलेट करें इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जैसे आप रिटर्न में करते हैं। और अगर आपको नहीं लगता उस वक्त जहन में कि आप फौरन बता सकते हैं इसकी 3, 4 या 5 डिमेंशंस हैं, और आपको लगता है कि जैसे मैं गुफ्तगू करूंगा एज द कॉन्वर्सेशन प्रोग्रेसेस तो शायद कुछ और मुझे याद है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर देयर आर 2 dimensions टू इट, यू कैन से सर देयर आर मल्टीपल डिमेंशंस, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज, एंड देन गो ऑन। इस तरह से बात आप करें। सो आर्टिकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन और द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, it is suggested that the candidate should come straight to the point always and then build on it, उसके relevant और जो required knowledge है उसके साथ articulate करना बहुत ज़रूरी है अपनी knowledge को, अपने thought process को, and then obviously accordingly अपने flow of answer को ensure करने के लिए। सर इसी से मतलब दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन, बट एक पॉइंट जो मेरे नज़दीक स्टूडेंट्स पूछते हैं, व्हाट अबाउट सेंसिटिव क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, एनी टाइप ऑफ ट्रिक टू टैकल दोस? देखिए, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन and we have a very diverse pool of people, and the commission, especially the Federal Public Service Commission, is a very important organization. ये मफाक को एक तरह से आप कह लें, if you allow me to say, एक तरह से रिप्रेजेंट ही करता है। इसने इंश्योर करना है कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में पूरे मफाक की नुमाइंदगी हो। सो यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग है आमतौर पे दैट इज वेरी रीजनेबल, ठीक है। कई दफ़ा हम जिस क्वेश्चन को सेंसिटिव समझ रहे होते हैं वो शायद इतना सेंसिटिव हो ना, ठीक है। द की हियर इज कि अवॉइड टेकिंग एनी डायरेक्ट नेम्स अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड, स्पेशली ऑफ अ रिलीजियस और सेक्टेरियन और पॉलिटिकल नेचर। अगर इस किस्म के सवालात हों, अनलेस अनटिल वो आपसे डायरेक्ट पूछें या आपकी डायरेक्ट कोई ओपिनियन मांग ली जाए, ठीक है। एंड इस तरह की सिचुएशंस में इट इज एडवाइज्ड कि आप लॉ के करीब रहते रहते जवाब दें, बिकॉज लॉ इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स द कंसेंसस ऑफ द सोसाइटी। सो किसी शख्स का, इंडिविजुअल का अपना जाती कोई भी व्यू हो, बट जब भी कभी आप लॉ को कोट करेंगे कि कानून इस पे क्या कहता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द कंसेंसस ऑफ द सोसाइटी, आपका रूम फॉर डिसएग्रीमेंट विद द इंटरव्यूअर विल बी मिनिमाइज्ड। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज of handling such a question.
बट अगर आप मुझे मजीद कोई एग्जांपल देगा, किसी बच्चे ने कोई स्पेसिफिक सवाल कभी पूछो, तो आई वुड बी हैप्पियर टू असिस्ट स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू दैट क्वेश्चन इवन. बट दिस इज हाउ आई बिलीव वन शुड बी टैकलिंग सच अ सिचुएशन. Right, sir. Thank you. I believe, sir, ये जो interview की discussions हैं, specifically during this time, it is very important, and I would request you, we will request you to please take up time once again, ताकि हम यहाँ आपसे 2-3 episodes इसके ऊपर करें और मज़ीद questions को answer करें. क्योंकि एक setting, I believe it isn't, it doesn't do justice to the topic itself. But sir, thank you so much for being with us today. Any final words, कुछ भी अगर आप कहना चाहें to the students, to the prospective candidates? Thank you very much, Osama, for inviting me today and for affording me this opportunity. And definitely, I would be more than happy to be here again and to assist my students, my future aspirants. हमारा future है ये लोग, इस मुल्क का, हमारी services का, जिस भी service को join करना चाहते हैं. Just one thing, interview इतना मुश्किल है नहीं जितना हम उसको बना लेते हैं. Be natural, be normal, and most important, be honest. Don't try to be something that you are not, and you should bear in mind that you are appearing before very senior people. Your maturity and your genuineness is very important. Don't be fake. Normal रहें, relaxed रहें, तैयारी करें, and at the cost of repetition, इसको quiz के तौर पे मत लें. अगर कोई एक आध सवाल ड्रॉप हो जाता है, it's absolutely all right. जो स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको आप कहते हैं, उसका मुजाहिरा करें. जो बॉल मिस हो गई है, फॉरगेट अबाउट इट, लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, एंड मेक श्योर दैट यू डिलीवर और शो योर बेस्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स ऑल. Thank you so much once again, sir. Thank you.